हेलो एंड दिस इज हैप्पी संडे। और संडे का मतलब है कि आपकी क्वेरीज का दिन है एंड दिस लाइव इज गोना बी वेरी स्पेशल क्योंकि इस लाइव में हम थोड़े से आपके क्वेश्चंस के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करने वाले हैं। हम किसी गेस्ट को भी आज बुलाएंगे एंड ही विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। आप हमेशा मुझसे मेडिसिन रिलेटेड कभी कभार क्वेरीज पूछते हैं एंड समटाइम्स आई फील कि मुझे ये क्वेरीज नहीं समझ में आती हैं और मे बी एनी ऑफ योर मेडिकल इशू। तो हम आज किसी को इंट्रोड्यूस भी करेंगे, आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट सेइंग हाय जो हैं। हाय। So this time I have started little before to my time. So yes, come on, keep on joining. And if you have any questions, just keep it with you and soon we are going to join with more and more questions. आज आपके questions भी लूंगी, आज किसी नए इंसान से भी आपको मिलवाने वाली हूँ। एंड आपकी जो भी मेडिसिनल क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपकी जो क्वेरीज हैं आप उनको लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो मेरे काम को लाइक करता है, दोज हु आर लाइकिंग दिस चैनल, दोज हु आर लाइकिंग द कंटेंट आई एम पोस्टिंग, आई एम ट्राइंग। अब मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा डिफरेंट कंटेंट आपके साथ लेकर आऊँ। बहुत बार लोग कहते हैं कि मैम सिमिलर टॉपिक्स पे चल रही हैं वीडियोज, तो थोड़ी डिफरेंट वीडियोज इस हफ्ते आई हैं। साथ साथ जो लोग यहाँ पर इस तरह से हैं कि हमें थोड़ा सा मेल पर्सपेक्टिव ज्यादा देखना है, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है विच इज लवोलॉजी सीखो। उसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जो लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखना चाहते हैं वो लवोलॉजी सीखो को सब्सक्राइब करें। जो थोड़ा सा साइकोलॉजी रिलेटेड कंटेंट तो मैंने रिफाइन कर दिया है, आप साइकोलॉजी सीखो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे मैं बहुत से नए थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स के साथ बढ़ रही हूँ, दैट हेल्प्स। जो लोग यहाँ पर मेरे को फेसबुक से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताएं कि हम आपके फेसबुक पेज से आपको यहाँ देख रहे हैं, so that I know कि आप when you are going to make video on penile implant very soon। मेरे बिल्कुल टारगेट पे है। एनर्जी ऑर्गेजम मेरे टारगेट पे है। टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल रिपोर्ट क्या होना चाहिए मेरे टारगेट पे ये वीडियोस हैं। बहुत जल्दी ये वीडियोस आपके सामने आएंगी। एंड दोज हु आर लाइकिंग द कंटेंट आई एम पोस्टिंग, प्लीज गो टू गूगल और रिव्यू करना मुझे नहीं भूलेंगे। गो टू डॉक्टर नेहा मेहता, गूगल पे टाइप करें और वहाँ रिव्यू का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आप जितने 3, 4, 5 जो भी स्टार्स देना चाहते हैं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप भी मुझे कहीं ना कहीं प्रेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। दैट यू नीड टू डू बिफोर वील स्टार्ट आवर क्वेरीज एंड लेट सम गेस्ट टू एंटर। मैं थोड़ा सा आपकी हेल्थ के बारे में बात करूंगी क्योंकि इस हफ्ते जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो आपकी जर्नल हेल्थ से रिलेटेड है। जब भी मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट्स आती हैं और ये प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि हमें वीकनेस बहुत फील होती है और आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दीजिए जिससे परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, उनको मैं हमेशा कहती हूँ देन लुक फॉर अदर थिंग्स इन योर बॉडी। नॉट अबाउट जस्ट योर सेक्स प्रॉब्लम्स। बहुत बारी एक्चुअली आपके जो बॉडी का स्टेमिना है, बॉडी में जो और वाइटामिन्स, प्रोटीन्स हैं, उनकी कमी होती है, तो उस वजह से भी चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। एक एज के बाद व्हेन यू आर अबव 30 आपके घुटने जवाब देने लगते हैं, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कट की आवाज आने लग रही है, कभी कभार हमें सांस फूलने लग रहा है, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि नहीं मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ तो आई कुडंट सर्वाइव, मुझे कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ऐसे में टू टेक अ ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस बार मैंने कुछ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट अश्वगंधा पे, जैसे मैंने वीडियो बनाया था न्यू हर्ब्स अश्वगंधा 1000+, जो एक्चुअली मैंने ढूंढा है जाके कि ऐसा अश्वगंधा हो जो जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो और सिर्फ अश्वगंधा ना हो, उसके आसपास भी जो हमें असेंशियल चीजें चाहिए होती हैं वो उसके अंदर हो। और इसलिए फिर वो नॉर्मल अश्वगंधा से हटकर अश्वगंधा 1000+ है। उसे जरूर नेचुरली भी, अगर आपको सिर्फ मैं बोल सकती हूँ कि आपको ऐसा लगे कि मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं वैसी एनर्जी वो बहुत ज्यादा डाउन लगती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, साथ साथ मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करने का तो मन करता है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाऊं मैं नहीं कर पा रहा हूं, देन अश्वगंधा इज समथिंग रूटीन में भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो इवन मेल फीमेल above 15 you can add it in your diet and it's absolutely okay। साथ साथ मैंने मल्टीविटामिन्स के बारे में भी आपको बताया था। मल्टीविटामिन्स
आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप बोलेंगे मल्टीविटामिन में हम बहुत सारे मिलते हैं, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, पिल फॉर्म में भी मिलता है. व्हाट सॉर्ट ऑफ मल्टीविटामिन यू गाइस शुड टेक? देयर आर लॉट्स ऑफ मल्टीविटामिन अवेलेबल. उसमें से मैंने एक मल्टीविटामिन आपको ढूंढ के दिया था, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए भी मैंने आपको T7 बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसे जरूर अपनी डाइट में डालें. ये ना बेसिक है. योर विटामिन डी, योर B12, विटामिन B6, some important multivitamins are very 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 important, जो आपको एक्चुअली ना डाइट से नहीं मिलते हैं, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इसको लें ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेटर है. इट्स नॉट बिकॉज कि हर किसी को, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एंड तभी मैंने वो ढूंढ के आपको न्यू हर्ब्स बताया है. जरूर उन चीजों को ऐड करें फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ आई गेस दिस इज, अब हम आपके क्वेश्चंस को यहाँ ले लेते हैं बिफोर आई इनवाइट माय गेस्ट. आज एक बहुत अच्छे गेस्ट हमारे साथ आने वाले हैं, वो ज्वाइन करेंगे और आपकी जो मेडिसिनल क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व करूंगी. सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, विच इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैम मेरे जो पेनिस का पोजीशन है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये ना हमारा मिथ है दैट, या हमने देखा हुआ है, पॉर्न में देखा हुआ है या इधर उधर देखा हुआ है, दैट इट हैज टू बी स्ट्रेट 90 डिग्री, जबकि ऐसा नहीं है. एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, द गॉड हैज गिवन अस ऑल डिफरेंट. और ऐसा नहीं है कि इसको 90 डिग्री होना चाहिए जो आपको ऐसे मूवीज में दिख रहा है या कहीं और दिख रहा है. अ लिटिल बेंट सबके साथ ऐसा है, थोड़ा सा बेंट इज एब्सोल्युटली ओके. Thank you, Naveen Gupta ji. Thank you. Please, where is your clinic situated? My clinic is in Hisar, Haryana. हरियाणा का एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है हिसार, वहाँ सिटी है हिसार, वहाँ पे आप आ सकते हैं. अगर आप नहीं कर सकते तो मेरा ऑनलाइन पोर्टल है www.drnehamehta.com, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करें. सो नाउ वी हैव अ गेस्ट ऑन लेन विद अस, और मुझे पता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सो वी विल बी वेलकमिंग हिम एंड ऑल योर क्वेश्चंस. एंड सबसे अच्छी, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद आवर गेस्ट. ही इज MD सेक्सुअल मेडिसिन, मतलब MBBS MD, एंड ही स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल जर्नल लैंग्वेज में बताऊं तो इनकी स्पेशलाइजेशन ही सेक्सुअल मेडिसिन में है. एंड ही इज वर्किंग फॉर मोर देन 10 years इनटू मेडिसिन्स. और अगर आपको कहीं भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, उनकी मेडिसिन का कुछ भी नहीं समझ में आता, देन दिस डॉक्टर इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल. इनको मैंने स्पेशली आज रिक्वेस्ट पे बुलाया है. अब आपकी जो जो क्वेरीज हैं उनको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को आंसर करेंगे. मैं तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आपकी जो भी क्वेरीज है उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आंसर करते हैं. वी हैव डॉक्टर प्रभु ओवर हेयर, मैं उन्हें बुला रही हूँ. एंड लेट्स सी कि आपके किस किस के क्वेश्चंस मैं यहाँ कवर कर पाऊंगी. keep on writing your questions so that nothing could left out. And here I welcome Dr. Prabhu for all your questions. Hello, Dr. Prabhu. Can you listen to me? Yes, hi, I can hear you. Yes. Okay. So, Dr. Prabhu is here with us for all your queries. We will, whatever your queries will be, he will be answering them all over here for you. And he'll also tell you what sort of medication to should start, कहाँ से शुरू करें, कौन सी मेडिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. और जो मेरे से रेगुलर क्वेरीज पूछी जा रही हैं, दैट ईदर वी शुड स्टार्ट विद आयुर्वेदिक वन और हर्बल वन इज गुड, या फिर हम ऐसी मेडिकेशंस लें, या मेरी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी जरूरी है. वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट, ऑन ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. So welcome, Dr. Prabhu. How are you doing? Thank you, Dr. Neha. It's such a pleasure to be on your show. I'm doing good from here. Thank you for giving your time. And
So the very first question is from Monu, and the question is that I have BP problem, and that is why I'm not able to perform sex well. What sort of medication I should start, or what should I do more to make my wife satisfied? Okay, may I know his age, please? His age, his body weight, and what exactly is BP? Or can I answer something general to him? Okay, maybe I can tell him some general. Yes, tell First of something all, general. If yeah, you reply, because he sound a bit of an young guy. So when he is young, no, I will always tell his BP is due to his anxiety and work stress. So we need to work on his work stress and anxiety. So that is where the main crux comes in. And of course, as you told, like erection is one problem with the hypertension, and he might be even having a premature ejaculation also. So we can start with some counseling session with him to see what actually his problem is. Then we can move on to some nutraceutical. It's called as herbals or natural components like ashwagandha, shilajit. We can move, and if he's not responding, then he has to try with this depoxitin on demand, or this extend spray we used to call as this lidocaine spray is there. yeah. So you can try that. So always you start with the counseling. You always approach a healthcare person, see what is the main problem, and we have to keep his BP under control. And where the breathing techniques, pranayama, work-life management, work management, all comes into role. So he can start with Nutra, then we can progress to these allopathic medications. यस सो डॉक्टर प्रभु इज सेइंग कि पहले आप एक काउंसलिंग सेशन बुक करें जहां आप ये जाने कि ये जो बीपी बढ़ रहा है या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये ज्यादा एंजाइटी या वर्क स्ट्रेस की वजह से तो नहीं है. जैसे ही आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ इशू नहीं है, इट इज ऑल अबाउट माई मेडिकल इशूज, देन यू शुड स्टार्ट विद बेसिक अश्वगंधा विच इज आयुर्वेदिक सप्लीमेंट. और अगर हमें लगता है कि इसके बाद भी प्रॉब्लम रिकवर नहीं कर रही है, देन यू कैन स्विच टू एलोपैथिक मेडिकेशंस एंड स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस. ऑलरेडी हमने डीले स्प्रे पे एक वीडियो बनाया है विच यू कैन गो फॉर. सो अगर आप उस स्प्रे को भी इंट्रोड्यूस करते हैं दैट कुड हेल्प यू विद द बीपी. बहुत बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्शन के इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि इन सबको भी अपने साथ रखें सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट. सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गणेश. Question is almost same, but I'll show on stream here. Good evening, sir. I hope you can read it. Yeah. So he has mentioned that he is having some erectile dysfunction, and so see, when a patient is coming with DD, I used to ask a few questions. First of all, is he sexually active? How much he is going to be sexually active? His age, his BMI, his work stress, his sleep pattern, and then we go on to some kind of an evaluation where it's called as a vascular complaints test. Then if require penile Doppler. So basically, we have to see what is causing his ED, whether he is going to like after a very long tiring day, it is not going to work for many men. And if he's obese, if the person is used to masturbate too much, so there's a line that what is too much then, because he is going to have a compulsory masturbative behavior when he is having insomnia or work stress, and he is trying to escape from insomnia or work stress. He's going to have a masturbative fantasy. That is why he's going to have this ED also. Not all masturbation can end up in ED. So sometimes people tell masturbation is healthy also. That is okay. That's one way of seeing that. But another way, and whether he's having a straight masturbation or a prone masturbation. So these all come into play. What is prone masturbation? They used to rub the penis over the bed. So where there's an excessive venous leak. So we cannot generalize how can improve my erection. But what I can see from here, if he is obese, just losing some 5 to 6 kg of weight, fat, like very specifically doing some weight exercises, jogging. If he is stressed out, there's simple pranayama, taking ashwagandha or shilajit. If he is having any other organic cause, if there is hyperlipidemia, hypercholesterol, hypertension, or a low hormone, which is less likely in young guys, and if he is having any high homocysteine or diabetes, then we need to see what is underlying cause. Then we can rectify it. So it's always advisable to start what he's into. Lifestyle management is a key here. If he is not getting succeed with that, then he can approach anyone to see what is organic cause for that. एब्सोल्युटली. सो डॉक्टर प्रभु ने यहाँ बताया कि आपको ओवरऑल कॉस्ट पे जाना है. जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हम डॉक्टर्स के पास आती हैं सेक्स इश्यूज को लेकर, देयर प्रॉब्लम इज दे वांट अ मेडिसिन वेरी अर्ली.
दवाई दे दो. Rather, you need to go to the root cause. That what is the cause? Either it is a psychological problem or it is a medicinal issue. Is it your body which is not helping you with it? That is very important. And lifestyle issue, with Dr. Prabhu said कि आपका lifestyle अच्छा नहीं होता. When I take appointments now, Dr. Prabhu had asked them height, weight, diet, and what is your work culture. So they patients ये बोलते हैं इससे आपको क्या लेना देना है, मतलब हम तो सही सही खा रहे हैं, अभी बाहर का खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं. So it's very important. See, Dr. Prabhu asked very first कि आपका age क्या है, आपका height weight क्या है. These things are very important before we think कि हम आपको medicine दे. Those people who randomly call us and say हमें दवाई बता दो बस. I have lots of queries on Instagram where they say दवाई बता दो बस. We have this problem. Doctor दवाई क्या है? And how could I tell you medicine until unless we know you, we know your body, and we know what you are going through. Because there are lots of things associated. सिर्फ सेक्स इश्यूज ही नहीं, साथ साथ अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है, ओबीज है, द वे डॉक्टर प्रभु सेड कि 5-6 किलो कम करना इज गुड. वी हैव अ लेडी ऑल्सो हेयर जिन्होंने यहाँ क्वेरी करी है दैट माई हस्बैंड इज नॉट सेटिस्फाइंग मी और मैं चाहती हूँ उनका वेट रिड्यूस हो, तो वो कैसे अपना वेट रिड्यूस करें. I guess I'm looking for the question, but she was like, if my husband is obese and I'm not able to, he's not able to satisfy me, how can I encourage him to lose weight? And does obesity, that means high weight, is somewhere hinders to a good sexual performance? Yes, of course. See, there are a couple of things here. A satisfaction is a mental thing. So we need to be very specific whether her husband is having poor erection or he is not performing well. Because Right, sometimes even appealing for a woman is more important. The guy will be having good erection, he's able to penetrate, he's able to ejaculate. But ultimately, what she is able to think that okay, my guy has changed a lot, he is not looking as smart as before, or he is not into me now because he just comes, he's very mechanical nowadays. So this satisfaction is a very huge thing. We cannot attribute only to ED. We have to see what is she into, whether she after pregnancy, women change a lot. Their whole right, vagina change a lot because the orgasmic points they change a lot. So they're so confused. Then they come to us, doctor, I'm not able to perform well. So this performance, this satisfaction is a huge thing. And with the online market, it is very easy to get sildenafil or tadalafil. The main thing is that once they take the tablet, when they don't have the issues, the brain thing goes off. Then every time they are so habituated to do take the tablets. Or else, if the patient is having an organic cause, if you take these tablets, like taking a paracetamol for headache will go off. But what's underlying cause? So there is a yeah, progression of this ED. Then there will be a stage that these medicines won't be able to work for them. Then they'll be pushed to implants. So I have many patients like this. They come with the suicide and that doctor, I have tried this Viagra or any other medication or acetaminophen, more common available OTC or tadalafil or Cialis, anything is that. And they come to a point that the highest dosage of sildenafil is, that is 100 mg or tadalafil right, is 20 mg. It is not working for them. yeah, So here, coming back to her satisfaction, of course, obesity, if he's having poor erection, losing weight can help to increase his erection. But we need to see what is his basic erection. Is it 0, 1, 2, or 3 or 4? So after seeing that, we'll be able to assess what is causing his issues. Whether that could be even, I can tell he'll be having any micropenis. He's not able to perform inside. So it's a huge discussion. We have to ask a question to the patient. So sometimes we have to be in the we should have a couple counseling also. I can say what is happening with the partner, whether is it with the wife or is it with the husband. So we have to see like that. So I think I've answered the questions for that. I think we have lost Neha in that somewhere. Maybe I can take a couple of questions from here. So somebody has asked extra long-term lasting climax condoms.
Mm, so there is a person who's asking, I have epilepsy. I take this. Okay, I think Dr. Neha is experiencing some network issues. Let me go through the questions. Yeah, see, I have go through some random questions where people are asking whether they're having some kind of epilepsy. What can I do? See, having epilepsy itself is an issue for brain signaling, but when they are on some medications, these medications can cause direction issues. So it is very wise to consult your doctor, to consult your neurologist that was prescribed your medication, or to consult a sexologist to show what medicines you have been prescribed and to see whether the medicine which we be prescribing is apt for you or not. So it's always advisable to get a consultation before you going for some medications. So extra long-term lasting climate-related condom side effects. See, when it comes about these lasting sprays or condoms, mostly it contains lidocaine or benzocaine in them. Every medicine has potential to cause some side effects. So these locally applicable medicines, they can cause some kind of an irritation, but they always like it's reversible. But main issue is that when you're going to use too much of this spray, the person might lose the. Let me know. Can you hear me? Okay. Yes. Hello? I can hear you Yes. now. Due to technical glitch, we have lost the connection. Now we are back again. So, all about answering the question to Nida that how can I encourage my husband to lose weight and what is the connection between high weight and mental satisfaction, the way you were discussing. Okay. Am I audible and visible here? All well. All well. Okay, visible, fine. So she's asking how to encourage her husband to lose weight. So that is a bit tricky question because we need to see what is causing his weight gain because fat loss is a multi-billion dollar industry. I was lean, then I gained weight when I was in between so busy in the work. Then this COVID gave me an insight of how to lose fat. I was having a lot of exercises from my childhood, so I was able to pick it up very easy. So I never measured my fat in between. I always measured my pant waist size, no, and shirt size. So I these kept on decreasing. So it was a kind of a motivating thing for me. So I always give a fixed script for my online patient. This script consists of fat loss techniques. It will include breathing techniques, some stress management things, some pranayam. Then there will be a fixed set of diet. There are few diets which when the patient takes, no, it is going to increase fat burning hormones. It's called as NEAT, non-exercise activated thermogenesis. Even when you don't exercise, there will be a stage where your hormones will burn the fat for you. That is what Right. we need. And there are some exercises which is going to help you to do that. And there are also few foods, if you're going to consume that, you'll always feel full. You don't feel the hunger pangs. You don't feel Right. that you are on diet also. It is so delightful, so tasty, and you feel you are eating more, but you're not eating more. In between for the, I think for the past 6 months or 1 year, I posted my whole diet schedule from morning to night. So you can go to my Instagram, you can see that everything is not by books. There will be a lot of carbs, lot of fruits, there'll be ice creams, chicken, but still I kept on losing it because every day I made sure I'm going to spend 1 hour exercising. That is what is one thing. It's called as Right. high intense interval training or jogging. To start with, you can always tell him to go for a walk. Slowly, slowly, half an hour and 20 minutes, you can motivate him. Just not by motivating him, you should also go for a walk. You take your Yeah. husband for walking. Don't tell I'm doing always not going. Why don't you go with him? You said taking a kid for your walk, right? You take your husband for a walk.
then she'll be following it up. So that is, I think, that is going to be a more biggest thing where you can motivate your husband. You do the thing what he wants, what you want him to do. Then for 7 days, for 21 days, then he'll be doing. So it is going to be a great a couple activity. It is going to ignite a lot of fire in you, because when you're going to do things together, you're going to spend more time together. This will Right. definitely lift on the bed with you. That's for sure. राइट एब्सोल्युटली। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रभु, आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेक्स लाइफ को बेटर करें तो आप भी इंकरेज करें, खुद भी जाएं उनके साथ वॉक पे एंड मेक अ वेरी गुड शेड्यूल एंड रूटीन दैट व्हाट आई एम गोइंग टू ईट टुडे, व्हाट आई एम गोइंग टू ईट लेटर एंड व्हाट इज माय डेली रूटीन, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैलोरीज आई शुड बी एडिंग। एंड यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल, समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट योर ओन कॉन्शियस, मुझे पता है मैंने ये खाना है तो आप ऐसे करके इस पे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन सर। स्क्रॉटम वन लेफ्ट साइड लार्ज, क्या ये कैंसर प्रॉब्लम है? पेन भी है, द पेन इन टेस्टिस इज अनदर क्वेश्चन हेयर फ्रॉम मिलिन। सर स्क्रॉटल पेन है 2 महीने से, यूरोलॉजिस्ट को दिखाने पर भी रियल रीजन पता नहीं चल रहा है, पेन कंटिन्यू है, व्हाई देयर इज पेन? एंड there is one more questions which clients usually ask, can only one testes or one scrotum can leads to have a good um, sex performance, or I'll have problem with baby? This testes and scrotum is something I guess you need to clear to our audience. Okay. See, let me give you a few understanding for the audience here. Testis is actually organ. Scrotum is a whole covering to that. Hmm. It has a huge function. Hmm. Testis needs to be kept at a temperature which is 0.5 to 1 degree less than the body's temperature. This is to increase the sperm production. That is why testes are not inside the abdomen, like how the Right. ovaries are inside for the females, right? And Hmm. it is going to move up and down. So regarding the body temperature and the external temperature, when the external temperature is too warm, it is going to hang down. The Right. body is also too warm. When the external temperature is too hot, sorry, when it's too cold, it'll go up. So this scrotum is going to pull it up. So that is the function of it. So there is no big scrotum. It could be big testis, number one. Yes. And second, there is always a discrepancy between two testicles. There will be, Yes. there will be some 2 to 3 cc will be there. It is normal. Left might be bigger or smaller. So we always tell them to hold this together and see which is weighing more. It is easier for them to see that. So don't confuse this with cancer. Cancer requires a specialist to see the consistency and any other blood parameters and other symptoms. So don't confuse that. And when there is a testicular pain, we always ask them what is inciting it. Many times people go for no fap movement, something like that. They'll be Yes. masturbating a lot and they'll be stop masturbating. Hmm. And what happens this time? They won't stop watching porn or they won't stop ogling girls. So what happens? There is a sexual stimulation and there is increased blood flow to the testicles. This keeps on piling up. This is called as blue ball syndrome or it's called as epididymal hypertension. Right. This will be cured only if it's going to ejaculate or when there is nightfall. Nightfall. So don't confuse with that. Testicular pain, don't always confuse with that. When you don't masturbate for a long time, there will be a pain. When you get hit somewhere, there will be a pain. And when there is infection also, there will be pain. What was infection? This can happen in case of anyone who's working on the desk for a long time. When you sit for a long time, when you don't pass urine for a long time, you don't consume water for a long time, there is a chance that there will be a prostate infection. And this prostate infection can have a referred pain in the testis. So always you go for a proper evaluation and best medicine for self-testicular pain is you take one paracetamol if the patient if the testis is very severely painful. 5 mg paracetamol, 350 to 5 mg if it is very severely painful until you meet a doctor. So you wait for a day, don't get panic, then you go meet a doctor. So there could be a varicocele or infection or anything else, not necessarily a cancer. राइट। सो देर आर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं आप सबको बता दूं, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चंस, आप भी मुझे पूछते रहते हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, टेस्टिस कोई प्रॉब्लम है। सो everybody has something like that.
हर किसी का एक छोटा एक बड़ा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे को प्रॉब्लम है और मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सेकेंडली, इफ यू आर मास्टरबेटिंग सिंस लॉन्ग और आप एकदम से बंद कर देते हो और आप बोलते हो कल से डॉक्टर मैं नहीं कर रहा और एकदम से मैंने 2 महीने के लिए बंद कर दिया, तो ऑल दैट सेक्सुअल स्टिमुलेशन ऑन है, आप देख रहे हो, आप कुछ पॉर्न देख रहे हो, वो ऑन है, तो अल्टीमेटली वो टेस्टीज बना रही है आपके सेमेन में कहीं ना कहीं है, और वो जो वो जम जाता है, then ultimately it gives you pain. So there are three reasons: either आपको आपने मास्टरबेट नहीं किया है काफी समय से, या फिर कोई इन्फेक्शन है, या फिर कहीं ना कहीं हिट हुआ है. सो इन केस ऑफ एनी सच इन्फेक्शन, एक पैरासिटामोल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. यू कैन स्टार्ट विद इट एंड स्लोली थिंग्स विल गो डाउन, एंड गोइंग टू अ डॉक्टर इज द प्राइमरी थिंग. डोंट जस्ट लीव इट ऑन योर ओन, गेट इट चेक्ड विद योर डॉक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं यहाँ ले रही हूँ, एक्स्ट्रा टाइम लॉन्ग लास्टिंग क्लाइमेक्स डिले कॉन्डम विच जिसका वीडियो मैंने परसों ही डाला, विच इज वेरी न्यू टू मी ऑल्सो. वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट टू नो इज इट्स एक्स्ट्रा टाइम एज वेल एज दे आर डिलेइंग एंड इट्स वेरी थिन. तो स्पेशली मैंने वीडियो बनाया ढूंढ के कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो ऑडियंस को हेल्प करे. यहाँ पर जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके साइड इफेक्ट यहाँ पूछ रहे हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? इज देयर एनी साइड इफेक्ट? Yeah, these condoms are called with something called as a benzocaine. A benzocaine is a local anesthetic drug, the condom over there. Any drug has the potential to cause some side effects. These condoms can cause some kind of an irritation or burning sensation. It might not be specific for many men. It is for few men who's having allergic to benzocaine. So we can predict that. It is always wise if you're going to have allergy, just remove it off, wash with plain water, running water, then it goes off. Number one. And second, what might happen if the person is going to be too sensitive for that, he may lose the complete sensation at all, then he lose erection. So that is one kind of an sad side effects. So these two can happen with this long last or delay condoms very commonly. These are the some kind of an a side effect which patients should know about that. So not to get panic over that. That's it. Right. And it can happen with any condom. It's not just about this extra time long lasting. Even if you are introducing anything to your genitals, अगर वहाँ पे आपको irritation है, even वो hair removing cream है, you should be very precautious कि मैं क्या use कर रहा हूँ, क्या वो मेरी skin में itching तो नहीं दे रहा है, and you have to instantly take an action if it happens. It can happen with any condom if you go and buy it. Next question is from Dipanshu. What should be eaten before and after performance to avoid weakness? Okay, before performance, don't eat a full meal. So it's always advisable to keep your tummy half empty because blood supply to the penis is more important. And if you want to divert it by taking a full meal or any heavy meal or any kind of a lump sum meal, it is going to take the blood supply from the penis to the tummy. And if the patient has already a compromised, like some places to the penis or a borderline ED, or if he's tired by the end of the day, this can definitely affect the performance. And if you want to have a peak performance, you can always take a couple of minutes, a small chocolate or a scoop of ice cream, which can increase your sugar levels, which can make you to perform well. That's it. And for regarding diet, is always go with half full stomach for any performance. That's it. For after performance, and I think if you're going to perform well, you'll get more sleep. So obviously was there. If you're going to feel tired again, see whether you're going to have a hypoglycemic episode because sex is a very I can say a tiring activity for few. So you can always have a munchies with you or a cake, something like that. Or I would advise them to have a cucumber or a watermelon or apple if it's going to late night sex. This induces a good sleep without gaining in weight. So it's always healthy also. Right. So डॉक्टर प्रभु बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वीकनेस ना हो तो फुल मील ना लें, डोंट ईट वेरी हैवी फूड, कीप योर सेल्फ लाइट इफ यू वांट टू परफॉर्म वेल, एंड आफ्टर अगर आप परफॉर्मेंस के कुछ लेना चाहते हैं, यू कैन ऐड लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स इन योर डाइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी प्रॉब्लम हैविंग सेक्स विद अ 58-year-old लेडी? आई एम 38-39. So this question is, I think I have to give to the psychologist first, then come to the organic cause because it's a very tricky question. I don't know in what intention he's asking. Yes, he might be asking that if there is any problem with the lady who is 60, because I felt that according to this
client, I guess he might be saying ki 58 years may she might not feel that good sex, or maybe she has less libido and I have high libido, or maybe her body is not that absorbing enough, or maybe she don't feel like doing with her body. So is there any problem? I don't think if there is any problem if she's more interested. If she is interested in having a boyfriend, interested in having an intimate relationship, I don't think there would be a problem. Do you think hormonically कोई problem हो सकती है that she might is going through something? Yeah, because see what happens, we have to see whether this person at the age of 38 Hmm. is this elderly woman or a semi-elderly woman, is he his first partner? Because I always tell my to anyone, choose your partner very wisely, very specifically, at least the first one, because the first one is going to put you into a thing of a sexual interaction. And Yeah. for example, this elderly lady who could be an unsatisfied person with the previous relationships, or who could be expecting more. If there is going to be an extra pressure over the performer, he is going to have a psychogenic ED. For example, patient they come with, doctor, I'm having premature ejaculation. When you ask them, they will perform for 20-30 minutes. So here there's a partner's stress over them. She might be having a dry vagina, she might be having a lax vagina, and she might be having something else that brain is not too young to receive that kind of a thing. So she will Right. ask him to perform more, and he is forced to perform them. So that is where the discrepancy. So here first session is only a counseling. What is making him to have to her, or what is making her to have with him? Then when I can tell whether the problem lies with whom or not. In general, we can't tell. Always he has to go with the thing. That's what I can say from this question. Yes, I really like this, and I want to tell everyone over here कि जब आप पहला पार्टनर सिलेक्ट करते हैं, सर ने बहुत अच्छे से बताया है, when you are selecting your partner for sexual performance, be very cautious and know कि वो आपसे क्या expect कर रहा है, because that is going to draft what is sex एक्चुअली, वो आपका बेसलाइन बनाता है कि सेक्स क्या होता है. अगर वो पहला परफॉर्मेंस आपका बहुत प्रेशर में रहेगा, then you might suffer from any psychological problems, which I have even discussed in my video on paid sex. That when you go for paid sex, एक pressure है that you have to perform in a time period of 20 minutes, 30 minutes. और वहां आप नहीं हो पाते हो, तो ultimately your psychological fear gets up कि नहीं हो रहा है and I'm not able to do it, and that leads to psychogen ED and premature ejaculations too. So, last question. I will not take much of your time, but this question is more about, I guess, let's take something on pregnancy. मैम प्रेगनेंसी टर्मिनेट के लिए मैंने किट लिया, हेवी ब्लीडिंग हुई, उसके बाद जब मैंने चेक किया तो हल्की पिंक लाइन फिर से आ रही है. इट्स मे बी शी गॉट टेस्टेड पॉजिटिव एंड देन शी टुक अ किट, and then again she tested through UPT and she is again getting that pink line. So what is the thing behind it? Does she Okay. needs to wait? Yeah, because see, yeah, this UPD, even today I was discussing with one person, a very known person. Like I told her, like, why didn't go for UPD? He told, why do you have a confusion with the lines? It is better to, if the person is legally married, legally wed, just go to a lab or a doctor, get you a serum, beta CD tested. One shot test over, no confusion. Simple. Why again UPD, again thin line, one line is not there. This happens when the patient is not able to go out because they are not wet, or they are looking for some kind of a termination. Those kind of happens. But if she like is she married? Is she mentioned over there? No. No married. Okay. I guess her husband only messaged her because I can Okay. find Gautam over here. So yeah, I guess they both are sitting and messaging, I guess. Okay. Okay. If you're married, please go and take like get your serum tested as blood test for pregnancy, beta HCG. He'll be giving you a sure short thing. Then go for a scan. Very sure that's pregnancy. Very simple. Because Yes. when the Even the UPT is hormones maybe get cheaper, down but too. mental confusion is there. Yeah. Yes. Okay, so last question, because this person is messaging since long, is what to do to make your semen thick or more viscous? Okay. Your should like your semen shouldn't be viscous at all, because when there is more viscosity, it means infection. I'll tell you other way. Guys Ah, want
गाढ़ा more. कैसे करें? So they all want, because everybody wants their cement to be highly thick, because they feel कि इसी में ज़्यादा sperm होता है, then only they have performed well. This is an indicator that their performance is well. The heavy cement discharge. There is something called as a spermatoria. It's a basic indication, because if you're going to have more amount of semen also, it's going to interact with like inhibit pregnancy, that's infection. I'll tell you an ideal thing. When you're going to do sex repeatedly, Hmm. daily or even repeated sessions in a single day, the semen volume will go down. And if Right. the person is masturbation, or any way, if you're going to empty your store's testes, your Hmm. semen production at least requires 2 3 days. Until Right. then, you won't get thick semen. For getting healthier semen, you always Hmm. go with vegetables, fruits, nuts. Hmm. This is the best way, and always de-stress yourself, because when there is stress, there is less amount of testosterone. When there is less testosterone, there is less amount of semen production. It is as simple as that. Right, right. So it's not about just heavy thing. Just know how much you are feeling. See, another question, मैम मेरा sperm 2 ml है, 7 ml तक कैसे बढ़ाएं? मतलब they want to increase that ml to 2 to 7 ml. I want you to just clear them out that it's not about ml. It's more about that how much active your sperm count is. That only matters. It's not about just increasing the quantity of how much you are discharging. I want to add one thing in there, Dr. Neha. See, I think this is because of pornography, where they Yeah, might be seeing where long ejaculation or more amount of semen volume. See, those guys who are performing, they are 6 feet tall, they are Americans or Europeans, their testicular average volume is 30 cc. right. Indians' average volume is less than 20 cc. So we cannot expect that much amount of semen volume from a small testis. This is Indian size. So they have to accept the fact that Indians, there will be less amount of semen volume, not comparable to them. 1.5 ml to 2 ml per session of intercourse in a 2 3 day of gap, it is healthy. If you could have frequently, it is going to go down. If you are stressed Yes. out, it will go down. So ask yourself, what is your current position in your mental status? Then reassess. If you're going to again have a doubt, always you call someone, get consultation. Don't go into the like a thing of online search, and don't fall into trap of like illegal medicines. They tell I'll make your semen bigger, more spurting and all. It's all bakwas. So don't fall into that. That's it. Absolutely, absolutely. Thank you, Dr. Prabhu, for giving your time. And next Sunday, I'll be taking your time again and we'll be discussing some more questions. Till then, I'll keep on writing their questions and we'll try to give them more and more details about what you spoke. I have wrote some points and I'm going to tell them in Hindi also. Thank you for giving your time and see you soon. Thank you, everyone. Thanks, Dr. Neha. Take care. Bye. Good night. Okay. सो यस आई एम कमिंग. 2-3 चीजें जो डॉक्टर प्रभु ने बताई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला ये कि वीरे को गाढ़ा कैसे करें, हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो डॉक्टर प्रभु ने यहाँ बताया कि गाढ़ा करने जैसा कुछ नहीं है. एक जो आप पॉन में देखते हैं कि उनका सीमेंट बहुत ज्यादा निकलता है, एक्चुअली मेल का जो टेस्टिकल है वो इतना बड़ा नहीं होता कि आपको उसमें से डिस्चार्ज 7 ml, 8 ml निकले. So whatever you are discharging is absolutely okay. Don't worry about गाढ़ा करना है या पतला करना है. अगर आप रेगुलरली मास्टरबेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी आपको कम लगे, एंड डोंट वरी अबाउट इट. जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा था प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सो प्रेगनेंसी से रिलेटेड द क्वेश्चन इज कि मेरे को फिर से पिंक लाइन लग रहा है. सो डॉक्टर प्रभु सेड कि
आप अगर मैरिड हैं और अगर आप ये समझते हैं कि भाई मुझे मेरे को प्रेगनेंसी में फुल प्रूफ श्योरिटी चाहिए, देन डोंट प्लीज गो फॉर द यूपीटी किड्स, गो फॉर अ ब्लड टेस्ट विच इज अ सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। वो आप जाके कराएं ताकि आप फुल प्रूफ श्योर हो जाएं कि कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं हूं आपके पास आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। डॉक्टर प्रभु ने बहुत अच्छा टाइम लेके, बिकॉज आपको हमेशा लगता है कि मैम हमें मेडिसिन से रिलेटेड बताएं, तो आई हैव स्पेशली इनवाइटेड डॉक्टर कि वो आके यहाँ आंसर करें। और कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ फिर से लेती हूँ ना। आई एम ऑल हियर टू टेक योर क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, okay, now ask me questions. How to prevent pregnancy? Use condom to prevent pregnancy. अब व्हेन आई हैव पोस्टेड वीडियो ऑन कॉन्डम्स, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि मैम मेरे को ना कॉन्डम अच्छा नहीं लगता, आई डोंट वांट टू यूज कॉन्डम। डू यू नो दैट कॉन्डम इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम so many problems and infections? It's not about feel, it's about safety. Your 1 minute of pleasure can let your whole life go into doom. तो बेटर ये है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू क्योर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस हर बार आते हैं। एग्जैक्टली किसी के लिए ऑनलाइन या लाइव बताना ये बहुत मुश्किल है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कैसे डील किया जाए, क्योंकि हर किसी की एज अलग होती है, हर किसी के मेडिकल इश्यूज अलग हो सकते हैं, कितनी बार उन्होंने मास्टरबेट करते हैं, ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स है वो डिफरेंट हो सकता है, मैरिड है अनमैरिड है वो डिफरेंट हो सकता है। सो बेटर टू बुक इन सेशन टू नो व्हाट इज दी what medicines works for you permanently, मेरे लिए क्या काम करता है उसके लिए बेटर। अगर आप जर्नली मुझसे पूछते हैं तो जर्नली के लिए कीगल्स एक्सरसाइज करें, रेगुलर रूटीन रखें, डाइट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें, कोशिश करें कि आप अपने जितना, अगर आप मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको धीरे 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 कम करें, एंड ट्राई टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ डेज इन पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट? सेफ डेज के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी मैं जर्नलाइज बोलूं तो आपके जब फीमेल के पीरियड्स के जस्ट पहले, पीरियड शुरू होने से जस्ट पहले और खत्म होने के जस्ट बाद सेफ होता है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, ऐसा नहीं है 100% प्रूफ है ये, लेकिन 90% ये मेथड काम करता है। टाइम इंक्रीज करने के लिए सिर्फ डिले इनफ है या फिर स्प्रे भी यूज करें? डिले इनफ है, डिले स्प्रे आते हैं मार्केट में, उसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ गौतम का क्वेश्चन हटा देती हूँ क्योंकि काफी समय से यही दिख रहा है। सो ओके, मेरा बेसिक नेचर क्या है उसे कैसे पहचाने? सो वन साइकोलॉजिकल क्वेश्चन इज ओवर है। देखिए, हम सब अलग अलग नेचर के हैं और हमारे नेचर में कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ अच्छी चीजें नहीं हैं। तो क्या है कि हमें अपना नेचर जब तक पता नहीं होगा, भी जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि व्हाट आई एम गुड एट, हम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेंगे कभी कभार वो सही रास्ते पे नहीं निकलता है। तो हाउ कैन यू डू इट? ईदर यू कैन गो फॉर एन एप्टीट्यूड टेस्ट। गूगल पे आपको बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं, तो आपको अपना बेसिक नेचर पता चल जाएगा। फ्री टेस्ट भी मिलते हैं गूगल पे, आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं आई वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन कम टू मी, हम एक एप्टीट्यूड स्केल करते हैं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं वहां पे कर सकते हैं। नहीं तो एक बहुत ईजी तरीका बताती हूँ, पेपर लो, उसको 2 भागों में बांटो, एक तरफ लिखो क्या चीजें मुझे करना अच्छा लगता है और दूसरी चीजें लिखो मुझे क्या चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। मेक अ लिस्ट और कंजिक्यूटिवली ये लिस्ट 5 दिन बनाओ। इसमें से तुम्हें कुछ ऐसी चीजें पता चल जाएंगी जो मुझे पसंद है और उसी में ही अपना फ्यूचर डालो। इन केस यू वांट टू, चाहते हो कि मैं डिटेल में एनालाइज करूं, यू कैन गो टू अ करियर काउंसलर, यू कैन कम टू अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बुक अ सेशन विद मी और एनी साइकोलॉजिस्ट नियर बाय टू नो व्हाट आई एम गुड एट। एंड यस, देयर आर सम टेस्ट अवेलेबल ऑन गूगल, आप उसे भी कर सकते हैं। Okay. Is magic condoms which are made of silicone elastic effective against HIV? Yes. All the condoms which are available are effective against HIV. Okay, now let's go for the questions, more questions.
Okay, so the Gautam Arya asked कि I have took a pill and after that भी लाइन आ रही है, क्या करें? तो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर फिर भी डबल लाइन आ रहा है तो आप ब्लड टेस्ट करके कंफर्म करें कि ये प्रेगनेंसी चली गई है या अभी भी है. प्रेगनेंसी का ब्लड टेस्ट करा के ही कंफर्म करें. डोंट यूज यूपीटी किट. आपने जो वो किट यूज की है जिसमें डबल लाइन आ रही है, नहीं है, आप जाके ब्लड टेस्ट करके ही कंफर्म करें. यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा किट ऊपर नीचे गलत रिजल्ट्स दिखा सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको एक बहुत बेसिक सी टेक्निक बताती हूँ यहाँ पर. ऑलरेडी ये टेक्निक हर लाइफ के हर एक्सपेक्ट पे काम करती है. जब आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं ना, इट कैन बी एग्जाम, इट कैन बी योर परफॉर्मेंस, इट कैन बी योर लव, इट कैन बी आप क्रश से मिलने जा रहे, इट कैन बी लेट्स से लेट मी से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं. जब आप ओवर स्ट्रेस्ड होंगे ना, तो आप एक्चुअली आपका सब कुछ खराब हो जाएगा. और ये सिर्फ आपकी इंटरव्यू या एग्जाम में नहीं होता, ये हमारी लाइफ के हर एक्सपेक्ट में होता है. अगर हम बहुत ज्यादा डर के खाना बना रहे हैं या डर रहे हैं कि आज तो मुझे बेस्ट बनाना है, आप अल्टीमेटली गलत काम करोगे, वो अल्टीमेटली खराब हो जाएगा. तो बेटर क्या है कि जब भी आप डर रहे हो या आपको इस चीज का परफॉर्मेंस से रिलेटेड डर लग रहा है, तो बेटर ये है दैट यू डाइवर्ट योर माइंड समवेयर एल्स. इट हैपन्स इन टर्म्स ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इट हैपन जब आप अपने करियर को लेके प्रॉब्लम में हो, परफॉर्मेंस को लेके प्रॉब्लम में हो, तो डाइवर्ट करो. कैसे? मे बी यू स्टार्ट भगवान का नाम लेना, जैसे आप 1 2 3 काउंट कर सकते हो. आप कुछ भी किसी भी वर्ड पे रेगुलरली कंसंट्रेट कर सकते हो. जब आप रेगुलर 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 किसी और चीज के बारे में बात करेंगे, सो स्लोली एंड स्लोली आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और फिर आपको डर लगना कम हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं कि जिस चीज से डर लग रहा है उससे हटाकर किसी और चीज पे बात करेंगे तो वो हेल्प करेगा. अब जो लोग मुझे यहाँ लिख रहे हैं माई टाइम इज 1 minute एंड आई एम वेरी फियरफुल फॉर माई एग्जाम्स, ये टिप हर चीज में हेल्प करती है. सो इसको समझें, इस लॉजिक को समझें. ओके, टीनेज लव साइन बताओ. टीनेज लव साइन मतलब आप कैसे रिकॉग्नाइज करें कि टीनेज में आप प्यार में हैं या नहीं है. इज इट समथिंग लाइक दैट? आई गेस द टीनेज लव इज मोर देन लव की जगह ये बहुत बार इन्फैचुएशन होती है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्यार में हूं, तो पहले उससे थोड़ा सा समय दें. एंड इन्फैचुएशन कैन टर्न इनटू लव एंड कैन प्रूफ कि वो प्यार है जब वो लंबे समय तक टिकता है. अगर कोई भी प्यार आपको 2 दिन हो रहा है, तीसरे दिन किसी और से हो रहा है, तो दैट इज नॉट लव, दैट इज इन्फैचुएशन. और टीनेज में यूजली इन्फैचुएशन होती हैं और वो ओके भी है, मतलब हो रही है तो इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है. लेकिन अल्टीमेटली उसको लेकर आप अपनी फैमिली से लड़ रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, घर से भाग रहे हो, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट एट ऑल राइट. सो give time to your love and let's see how things work out. And if it is love, it will be definitely there. मैम गर्ल को इम्प्रेस कैसे करें? ऑलरेडी इस पे बहुत बड़ा वीडियो है, लड़की को कैसे इम्प्रेस करें. द वेरी बिग वीडियो ऑन यूट्यूब, ट्राई हाउ टू इम्प्रेस गर्ल बाय डॉक्टर नेहा मेहता. बहुत अच्छा वीडियो है, उसे देखें. Circumcision penis have less sensitivity according to report. Is it true or not? Actually, there is no proofs to that कि भाई less sensitive होगा circumcision penis और ये issues नहीं होंगे, ऐसा नहीं है. It can happen to anyone. तो अगर आप स्पेशली ये सोच रहे हैं कि मेरा अनसर्कमसाइज्ड है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आई गेट इट सर्कमसाइज्ड और मैं कोई सर्जरी करा लूँ, डोंट गो फॉर इट. गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, we are also losing some questions. मतलब पीछे नहीं जा रहे हैं questions. Okay. Hi Tariq, I am from Saudi Arabia. I have most of the time drops and wet.
what to do, yet have to marry. Don't worry. I think you are thinking a lot about girls, sex, thinking a lot. Don't do it. Because if you keep on thinking about it, you might be having lots of pre-cum and that makes your pant wets. तो ऐसा मत करो. Okay, next question is Ramakrishna Smart. I am not getting your questions. Can you retype it? Okay. आखिर में एक लड़की चाहती क्या है आदमी से, मुझे ये बताओ. एक्चुअली वो आपसे कुछ चाह नहीं रही है, वो आपसे एक पार्टनर चाह रही है जो उसे वैसे एक्सेप्ट करे जैसी वो है. हाँ, उसकी जो प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग होता है, हम सब एक फिल्टर के प्रोसेस में. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप फिल्टर कर रहे हैं. आज काफी लोग मुझे बोल रहे थे मैम आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स टू माई क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि जब हम किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, किसी को चूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे फिल्टर करते हैं. कैसे फिल्टर करते हैं कि ये फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं, या ये मेरे साथ खड़ा रहेगा या नहीं, या फिजिकली ये मेरे साथ अच्छा है या नहीं. जब तक वो फिल्टरिंग का प्रोसेस है ना, वो आपको थोड़ा सा तोड़ सकता है कि वो तो ऐसे भी कह रही है, ऐसे भी कह रही है, ये भी चाहती है, वो भी चाहती है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये लड़की मेरे लिए ठीक है या नहीं. इनिशियली इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. तो आपको लगता है कि यार ये चाह क्या रही है लड़की मेरे से. वंस शी विल बी प्रूवन, उसको पता चल जाता है कि आप सही हो, तो चीजें बहुत ज्यादा फ्लुएंट जाती हैं. सो अल्टीमेटली इट हैपेंस विद गर्ल्स ऑल्सो, कि उनको लगता है कि लड़का कैसा है यार, समझ नहीं रहा. इट हैपेंस इन मैरिज ऑल्सो, इट हैपेंस एट वर्क ऑल्सो. हर बार आपको लगता है कि आप अपने बॉस के लिए रेगुलरली काम करते जा रहे हो, बट वो पता नहीं इंप्रेस ही नहीं होता, बॉस मुझे इंक्रीमेंट ही नहीं देता. सो दिस हैपेंस. Okay, hi Dr. Neha. I'm feeling very hot and too much sweating full day. What should treatment I should go? See, summers बहुत ज़्यादा है and it can happen. Take a bottle of water with you and have frequent water breaks. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको लें. थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए you can have आंवला. आंवला is very good. और you can also have some खसखस with you. ये बहुत natural तरीके हैं, इसे लें और that will help. Okay, how can I increase my sperm to 2 ml to 7 ml? That already Dr. Prabhu have discussed that there is no point of increasing your sperm. The point is to keep your sperm healthy. आपका count healthy होना चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी या कंसीव करा सकें अपने पार्टनर को. इंक्रीज करने से कुछ नहीं होता. Okay, ma'am, I'm aware that masturbation is healthy and the guilt is associated with morality issue. We perceive during every time I masturbate, still my guilt persists. There is nothing like that. You can change your perception. Masturbation is not at all being guilty. बहुत बार ऐसा होता है कि आप पॉर्न देख रहे हो एंड यू आर मास्टरबेटिंग. आफ्टर यू आर डिस्चार्ज्ड, आप जैसे ही और आगे आपसे देखा नहीं जाता है एंड यू फील रियली गिल्टी कि यार मैंने क्या देखा, मैंने क्यों किया. इट हैपेंस, बट ऐसा मत सोचा करो. मास्टरबेशन हैज नो लिंक टू बीइंग गिल्टी. अगर आपने करने के बाद एकदम से नेगेटिव हो गए या गिल्ट ले लिया, देन इट इज गोइंग टू ब्रिंग नेगेटिव इफेक्ट. तो लड्डू खा रहे हो, खा लिया, फिर रो रहे हो कि क्यों खाया, दैट इज रॉन्ग. Eaten it, that's okay. I'll exercise more. So that is better. Don't develop a guilt. That will create lots of issues. Okay, so this live has more to an hour. 1 घंटा हो गया है हमें बात करते करते. I have tried answering all the questions और डॉक्टर प्रभु ने भी आज बहुत अच्छा सेशन लिया. In case you are interested to talk to Dr. Prabhu, he is available on boldcare.com. It is a very good platform, very good brand जो male sexual issues से बहुत 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 सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास. आप जाके देख सकते हैं. दे आर इवन गिविंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू यंग मैन. आप चाहें तो डॉक्टर प्रभु से वहाँ मिल भी सकते हैं. और सून आने वाले सेशन में भी मैं डॉक्टर प्रभु को लाऊंगी और हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. ऑल दोज हु आर लाइकिंग माई वर्क, आज तो बोल के सच्ची में गला बट मेरी पनिशमेंट है क्योंकि मैं लास्ट संडे नहीं आई थी ना लाइव, तो इसलिए फिर मैंने इस बार वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट. सो इट्स ऑलरेडी 10 PM, सो अबाउट टू स्लीप. कल मंडे ब्लूज फिर सबको शुरू हो जाएंगे. सो
coming again. And all those who are liking my work, very easy thing is just go to Google, टाइप डॉक्टर नेहा मेहता, और प्लीज मुझे रिव्यू करें. आई नीड ऑल ऑफ योर रिव्यूज, ऑल दोज पीपल हु आर लाइकिंग माई वर्क. एक बार किसी को ऐसे बोलना कि यस, वेरी गुड डॉक्टर नेहा, बहुत अच्छा कर रहे हो. द वे शिवा पंडित है रोट, मैम इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू लाइव. प्लीज 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 गो टू गूगल एंड रिव्यू that Dr. Neha Mehta, we are liking your work. Please make more videos on that topic, or this is something. Please review section हमारे लिए open है हमेशा, और वहाँ पर आप ज़रूर गूगल जाके रिव्यू करें. और हमारे दोनों नए चैनल साइकोलॉजी सीखो और लवोलॉजी सीखो, दोनों मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं. प्लीज़ उन्हें जाके देखें. बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं यहाँ नहीं बात कर पाती हूँ. दैट वीडियोस विल कम देयर. सो प्लीज़ 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 गो एंड सब्सक्राइब दीज टू चैनल्स, लवोलॉजी सीखो एंड साइकोलॉजी सीखो. दोनों हमारे नए यूट्यूब चैनल हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू रिव्यू. एंड इंस्टाग्राम पे मैं हूँ डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और फेसबुक पे भी. इन केस यू फील लाइक बीइंग देयर, आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे कई लोगों के क्वेश्चंस अभी पेंडिंग हैं. सून आई एम गोइंग टू आंसर देम. डोंट लूज होप. और जो करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके भी मैसेजेस मैं धीरे धीरे रिप्लाई करने लग रही हूँ. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. लेट्स स्लीप सो दैट वी कुड स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम टुमारो. थैंक यू सो मच, एंड सी यू अगेन. एंड फॉर बुकिंग सेशन, डॉक्टर आपसे बात कैसे हो सकती है, www.drnehamehta.com. ईजी है, DRNEHAMEHTA, drnehamehta.com पे जाएं. यू कैन बुक अ सेशन फॉर यू. बाय, गुड नाइट.